We see these supernormal stimuli in every part of our environment, in junk food, in plastic decoration, in mating partners certainty, we don't have injury proneness as much as we would face it in our natural environments. We have dark concrete walls and our nights are fully lit, so our experience of light is extremely different from what our bodies are designed to respond to. From sports to politics, so we have built an augmented world of certainty for most human beings, which is a good thing. So let's not start. Not for a moment am I prescribing that we need to go back to nature, but let's understand that we have built a completely different world upon the natural environment that we live within. But our bodies are designed to respond to a natural environment. So how do we close this gap is really the question now. Because what happens in this reversal is that once sustaining and protective evolutionary strategies become excessive because they're not being used, and they become the core causes of many emotional disruptive behaviors and diseases of today. So while anxiety is extremely useful for an ape resting on a tree, looking at tall yellow grass below, and witnessing black dots in the yellow grass and experiencing anxiety because these black dots don't seem to make sense, and the anxiety causes the ape to figure out what these dots are, and soon that intense curiosity and fear of these unknown black dots makes the ape come up with an answer that the black dots seem to be a leopard, and that anxiety saves the ape's life. But the same black dots on somebody's shirt seen on an Instagram profile would also create unknowingly responses in us. And today we are living in oceans of such triggers. Some of them are good, some of them call trigger our smoke alarms. What we don't know is what triggers our smoke alarms in what contexts. आंखें प्रकृति द्वारा संस्कारित हैं कि वो जब भी कुछ अलग देखें तो तुरंत उसको रजिस्टर करें। क्यों? क्योंकि जंगल में इस बात की उपयोगिता थी। आंखों को जंगल में जब कोई चीज दिखाई देती थी जो धारीदार है, तो बिल्कुल चमकते हुए पीले रंग की है, तो क्या संभावना है? वो क्या है? वो बाघ है। बच्चों, तो तुम्हारी आंखों को प्रशिक्षण मिला हुआ है कि हरा हरा हरा, उसमें अचानक कुछ अलग दिखाई दे, आंखें तुरंत उसकी ओर चली जाएं। ये इसलिए था ताकि शरीर की सुरक्षा हो सके। ये सिर्फ शरीर की सुरक्षा के लिए था। तो आंखों ने इसलिए सीखा हुआ है चमकीली चीजों की ओर आकर्षित होना। वो सुरक्षा का इंतजाम है ताकि शरीर की सुरक्षा हो। लेकिन हम मन को चैन देने के लिए उस बात का दुरुपयोग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम आंख को तमाम चकाचौंध करने वाले और भड़काने वाले दृश्य दिखाते हैं। अब आंख उत्तेजित होती रहती है, ले दे करके मन को संकेत ये जा रहा है कि सतर्क रहो, आसपास कहीं कोई सांप है। तो मन सोने नहीं पा रहा, मन उबने नहीं पा रहा, पर ये मन को धोखा दिया जा रहा है ना। और जब तुम वो रोशनियां दिखाते हो तो मन उठ बैठता है। मन क्यों उठ बैठता है? क्योंकि मन लाखों साल पुराना है। हर तरह की रोशनी देख करके मन को या तो ये याद आता है कि पीला पीला है तो सेब होगा कि आम होगा या सांप होगा, तो मन सतर्क हो जाता है कि अपने काम की कोई चीज है, जरा सतर्क रहो, सो मत जाना। सो गए तो सांप होगा तो मारे जाओगे और आम होगा तो चूक जाओगे।